Drumpellier Country Park is a country park which is situated to the west of Coatbridge, Scotland. Park covers an area of 500 acres and comprises two natural lochs. The lochs of Drumpellier are part of a chain of cattle ponds formed towards the end of the last ice age. And as the glacier that covered most of the Scotland slipped down towards the sea, and it churned up great tracts of land. And this created the great lochs such as Lowland and Linney, and also produced small pockets of water. Hello guys, good morning. Welcome back to my channel. So I'm here in Glasgow. It is the second day and मैं आ रही हूँ पास में एक छोटा सा लेक है और बहुत ही नेचुरली ब्यूटीफुल प्लेस है. मैं आ रही हूँ और आपको भी लेके आ रही हूँ. चलिए मेरे साथ. गाइस ये है लेक. पहुँच गए हम लोग. ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर है ये वहाँ से. ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल सीनरी है. सारे डॉग्स. ओह माँ, डॉग्स अंदर पानी के अंदर चले गए. This park is known as Drumpellier Country Park in Coatbridge. It is a very beautiful park with beautiful natural scenery. It is dog friendly and one cafe is also there which is very excellent with prices. It's a nice scenery. It's very beautiful. Wow. This fantastic park has lots of facilities and trails for a great family day out, including a visitor center, cafe, wildlife displays and adventure playground. The woodlands and grasslands are also rich in bird life, large and small mammals and a great variety of native wildlife. Two roads diverge in a wood. This is the famous poem by Robert Frost. So, this is one. This is second. Which road I want to choose? So I think the best road will be this. Because so guys, मुझे यहाँ के इतना अच्छा लगा है कि मुझे पोएम लिखने का मन हो रहा है. यस, बहुत ही अच्छा है. बहुत पीसफुल है जगह और इतनी वेदर अच्छा वेदर है. ऐसे तो बारिश होते रहते हैं लेकिन अभी इतना सनी वेदर हो गया आज, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है. मैं बहुत लकी हूँ. तो मैंने एंजॉय किया जो ब्यूटीफुल नेचर है और अच्छे सुंदर लोग और beautiful dogs. Also I'm enjoying. Some breathing space. Yes, really, it's true. This is the space where we can breathe fresh air. ये है swans. ब्लैक है, एक वाइट है. बहुत ही The woodlands and grasslands are also rich in bird life, large and small mammals, and a great variety of native wildflowers.
यहाँ बहुत सारे बर्ड्स हैं, swans, ducks, some are resident and some are migrants. So हम लोगों को बहुत मज़ा आया ये देख के। आप गाइस देखिए कितना सुंदर है और लग रहा है कि यहीं बैठ जाए, यहीं रह जाए। ये है स्कॉटलैंड का स्कूल और ये स्कूल का प्लेग्राउंड, बच्चे खेल रहे हैं और वो है स्कूल। यहाँ से पूरा बिल्डिंग दिखाई नहीं दे रहा है, बट ये बहुत ही सुंदर स्कूल है, बहुत ही अच्छी जगह में, तो बहुत अच्छा लगा है। देखिए गाइस, बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल।